जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं हमारे जून के एग्ज़ाम 2026 के लिए, और हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न। तो सबसे पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। The Marxists represent Marxism as a scientific account of social change। ये हमारा assertion है। अब हम रीज़न देखते हैं। हमारा रीज़न देखते हैं। रीज़न: द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी believes that culture is a mirror of social life and the artist is an engineer of the human soul, educating the work classes. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not correct explanation of A. Third है A is correct but R is not correct. Fourth है A is not correct but R is correct. तो हमारा सही आंसर जाता है 1. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A। चलिए पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। Assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion। Marxism, अच्छा ये अब हमारी डीप स्टडी हो जाती है। अगर जब हम PYQ पढ़ते हैं और उसके एक एक आंसर की हम डिटेलिंग में जाते हैं तो हमारी डीप स्टडी हो जाती है। हमारी तैयारी का जो बेस होता है ना और भी मजबूत हो जाता है। तो ये मत समझिए कि ये टाइम टेकिंग है या फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं। लास्ट टाइम पर ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है आपका सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करने की। मार्क्सिज्म इज़ अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन इनिशियली डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंगल्स in the mid-19th century to arrive at the scientific analysis of modern economic life and capitalism. The doctrine essentially uses a materialistic interpretation of historical development to understand class relations and social conflicts and to see how change in capitalistic mode of production fosters social information. Marxists believe that economic and social conditions and especially the class relations that derive from them affect every aspect of an individual's life, from religious beliefs to legal systems to cultural framework. So the role of art and artist then is not only to represent such conditions truthfully but also to seek to improve them. Artist thus becomes an engineer of the human soul who brings about the change by educating the working class। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। द एंशियंट एंड मॉडर्न क्वारल इन वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपीयर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 100 BC, सेकेंड 5th century AD, थर्ड 16th century AD या 20th century AD। हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट है, 16th century। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। The ancient and modern quarrel in Western literary criticism appears during 16th century AD। डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी, डिटेल पढ़ते हैं। The ancient and the modern quarrel in Western literary criticism started in the late 16th and early 17th century. The Renaissance humanistic revolution and its discovery of the intellectual achievements from classical Greek and Roman antiquity set the framework for the upcoming scientific revolution. As a result, authors like René Descartes and Francis Bacon wanted to restart the entire project of science and humanities by determining laws based on examination of reality rather than scripture. Thus, they challenged the supremacy of classical writers. At the same time, the ancient maintained that the literature of ancient Greece and Rome offered the only models for literary excellence. The debate was again picked up in the 20th century
by authors like Matthew Arnold and Levi-Strauss, who defend the ancients. Question number 7. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. So हमारा assertion है, in so far as we are taught how to read, what we engage are not text but paradigms. हमारा reason we appropriate meaning from the text according to what we need or desire, or in the other words according to the critical assumptions of the predispositions that we bring to it. हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं. तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर 1. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देख लेते हैं. It is true that when we read a text, we read a paradigm wherein we set a meaning which we need or desire. We appropriate meaning of a text according to the critical assumptions or predispositions that already exist in our mind.